Hey guys, welcome back to my channel 9 to 5 feed. So guys, आज मेरा इंटरव्यू है HCL टीम के साथ. So let's see. अभी 20 मिनट बाद इंटरव्यू स्टार्ट है. देखते हैं क्या होता है. पोजीशन इंटरव्यू है पोजीशन .NET के लिए. ये मेरी वाइफ है, बीच में कुछ भी बोलते रहती है. इंटरव्यू है .NET पोजीशन के लिए, एंगुलर और AWS के साथ. अराउंड 8 to 10 years एक्सपीरियंस. So I have that experience, so I have given that interview today. So let's see what will happen. साथ साथ बताता रहूँगा, लाइव रहूँगा इंटरव्यू पे, देखते हैं क्या होता है. गाइस मैं आपको दिखा दूँ मेरा सेटअप. ये गाइस मेरा सेटअप, ये अभी बहुत गंदा है लेकिन कोई नहीं, फ्रंट में है तो सामने. ये कल मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो हटाना भूल गया. तो अपनी शक्तियाँ मैं अभी डालूंगा. एक शक्ति, ये दूसरी शक्ति. ये गाइस ये मेरी वाइफ है. इसको मैं कह रहा हूँ बाहर चली जा, बट जा नहीं रही है. मेरा इंटरव्यू है 10 दिन के बाद. एक इंटरव्यू मिली. मेरा लैपटॉप निकाल रहा हूँ मैं. ये मेरा लैपटॉप. ये गाइस मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया. सेटअप में करने जा रहा हूँ. देखते रहे गाइस, मैं पूरा लाइव रहूंगा इस इंटरव्यू के लिए. पहला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ काफी टाइम के बाद. आई डोंट नो हाउ द एक्सपीरियंस विल गोज ऑन, बट आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस होगा. मैं बहुत नर्वस हूँ. तैयारी कर रहा हूँ गाइस. ऑलरेडी मेरे 9:40 हो चुके हैं गाइस. बैठ गए हैं इंटरव्यू देने के लिए. लेकिन गाइस इस स्टेज पे आके मतलब इंटरव्यू देना कुछ अजीब सा लग रहा है, बिकॉज 4-5 साल हो गए इंटरव्यू देते हुए. मतलब 3-4 साल से तो कंटिन्यू इंटरव्यू ले ही रहे हैं कंपनी के लिए. बट आई डोंट नो हाउ विल बी द एक्सपीरियंस टुडे. लेट्स सी. अभी मैं थोड़ा तो बस चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे. वो करते हैं कि AI वगैरह ओपन कर लिया, कॉल वगैरह करके. नहीं, मज़ा नहीं आता उस चीज़ में. पास होना है तो अपने दम पे है, ये क्रैक करना है अपने दम पे. तो जानने के लिए देखिए गाइस, मैं लाइव रहूँगा पूरे इंटरव्यू में. अभी सारा सेटअप कर रहा हूँ इंटरव्यू में के लिए. गाइस मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब है, मैं यूज़ करूँगा वेबकैम. हाँ उतार दो. ठीक है. 10:45 हो चुके हैं, 15 मिनट रह गए हैं इंटरव्यू के लिए. तब तक मैं सेटअप कर लेता हूँ. 5 मिनट पहले, एटलीस्ट 5 मिनट पहले ज्वाइन करना होगा. हेडफोन भी मैंने लगा दिए यहाँ पे. तो इस प्रॉपर सेटअप हो चुका है मेरा.
जो मुझे चाहिए। स्पेक्स मैंने लगा लिया एंड हेडफोन माइक वगैरह सेट कर लिए, वेबकैम सेटअप कर लिए एंड कैमरे को मेरे को आई थिंक कहीं और प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल आंखों के सामने लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब डिस्ट्रैक्ट होऊंगा मैं इस चीज़ से। तो आई विल प्लेस समवेयर एल्स। कहाँ रखा जाए, आपको दिखा देता हूँ एक बार सारा। इंटरव्यू है 11 से लेकर 11:45 तक, 45 मिनट इंटरव्यू, और मैं प्रॉपर मतलब 45 के 45 मिनट में लाइव रहूँगा। और आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस आफ्टर दिस इंटरव्यू कि हाउ माई इंटरव्यूज विल गो ऑन, कैसा गया मेरा इंटरव्यू, और बताऊंगा क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आई एम नॉट परफेक्ट एट ऑल, also need to I think that is the best position. थोड़ी नर्वसनेस मेरे को हो रही है क्योंकि अराउंड 4 ईयर्स आफ्टर, जब मैं मतलब 3-4 साल एक्सपीरियंस का था तब मैंने इंटरव्यू दिया होगा लास्ट। अब 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आई नो कि अच्छा एक्सपीरियंस है, बट पोजीशन जिसके लिए मैं जा रहा हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑलरेडी मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे हूँ, टीम लीड भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं पे। तो अभी यहाँ पे जो पोजीशन अप्लाई है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो क्योंकि सामने से जो इंटरव्यू लेने वाला आएगा वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती, वो किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर फाइंड कर देते हैं, हम जो एक्सपर्टीज होती है वो किसी और टेक्नोलॉजी की। होप सो मेरी प्रोफाइल के साथ मैच हो जाए। गाइस डोंट माइंड, मतलब पहला व्लॉग है मेरा, और मतलब पता नहीं क्या माइंड में आया, मैं चलो अचानक से चलो आज इंटरव्यू है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज गणेश चतुर्थी भी है, दोबारा हम कर देते हैं। पिछली गणेश चतुर्थी पे मेरी मैरिज हुई थी, तो अब देखता हूँ थोड़ा प्लेसमेंट वगैरह कुछ चेंज वगैरह कर सकते। गाइस एक आईडी मुझे प्रिपेयर करनी पड़ेगी लाइव में उन्हें शो कर पाऊँ। लेट तो गाइस आई होप कि सबको सब दिख रहा होगा लाइव, मतलब बेटर साउंड आ रही होगी, आई होप सो। लेट्स सी। तो यहाँ पे गाइस 10:50 हो चुके हैं, अभी मैं 10:55 10:53 के अराउंड मैं ज्वाइन करूँगा। आपको दिखाऊंगा कि ज्वाइन करते हुए क्या क्या वो मांगते हैं, और कोई रिक्वेस्ट क्या क्या हमें चाहिए ज्वाइन करने के लिए। बेबी एक मेरा आधार कार्ड देना, कहाँ रखा था तो? आई थिंक उसमें उसमें रखा था। बहुत आलती है, बहुत टाइम लगाती है। हेलो कर दो, हेलो हेलो, जोर से बोलो, जोर से। आज मेरी शादी का हल्दी थी, आज मैंने कोई वाला सूट डाला। एक गणेश चतुर्थी में जा रहे हैं, मेरे को घर पे छोड़ के कहते हैं आप इंटरव्यू की तैयारी करो, आप पैसे लाओगे तभी मैं ऐसे घूम पाऊंगी। हाँ, मैं दुआ करके आऊंगी, मेरे पति का इंटरव्यू क्लियर हो और अच्छे
ये ये सब तो देखो बहाना है, आप लोगों को भी पता है। पैसा कमाना है, घूमना है, फिरना है, गणेश चतुर्थी को होके आना है। पति नहीं समझते ना, बीवी होती वो। सही बात। तो गाइस मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाह रहा इंटरव्यू से पहले। क्या? नहीं कुछ नहीं, बस वही बता रहा था अपने सब्सक्राइबर्स को। गाइस मुझे ये लाइन कट करनी पड़ेगी। सो गाइस क्या 10:52 हो चुके हैं। आफ्टर 3 minutes we will start the interview. So till now I will test my camera and all things, mic and all things. इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मुझे वट नहीं होना चाहिए, मुझसे खड़ी होनी चाहिए। चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे हम जॉब के ले जाए। You can close the door, please. Oh what? वेबकैम आई थिंक गाइस मेरे को दूसरा वेबकैम अरेंज करना पड़ेगा। इसमें तो बहुत मतलब डार्कनेस सा फील हो रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मतलब इसके अंदर तो मतलब मेरे को बहुत ही डार्क नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। थिंक दिस वुड बी द बेटर। लाइट भी नहीं है कि हम दूसरी लाइट जला पाए और तो थोड़ा एडजस्ट कर पाए। तो आई थिंक मुझे ये वाली लाइट जलानी पड़ेगी। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ओके गाइस, सो 10:54 हो चुके हैं। लेट्स सी, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। अभी 2 मिनट में मैं ज्वाइन करूँगा। कैमरा अपने हाथ में रखता हूँ। ज्वाइन करने के बाद मैं कैमरा वहाँ रख दूँगा, बिकॉज अगर उन्हें पता चला तो हो सकता है वो इंटरव्यू कैंसिल भी कर दें अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कोई ब्लॉग भी नहीं या फिर ऐसा कुछ बना रहा हूँ। आई थिंक रास्ता सेट है। इसी मेरा सेटअप डज नॉट मैटर पीछे क्या रखा है, इग्नोर। मैंने गेट बंद करने को कहा था और इन्होंने एक नहीं सुनी। हे गाइस, ये मेरे कपड़े हैं कपड़ों में से। तो गाइस गेट पे लॉक लगा दिए ताकि ये मुझे इंटरव्यू के टाइम पे इसको कोई सामना कर पाए। लेट्स सी गाइस, मतलब एक नर्वस सी मेरे को हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। आज सैटरडे भी है, मुझे भी शेड्यूल बैठना पड़ा। only for this interview. मतलब एक पंजाबी बंदा ही होता है जो इंटरव्यू तो पहले पग सैट करता है। मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चन कोई कुछ नहीं देखने, बस पग सैट करने हैं। पग चंगी है तो इंटरव्यू बढ़िया जाओ। 10:52 हो चुके हैं गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं इसी के साथ। गाइस मेल ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेल आ रखी है।
which one? अरे कहाँ गई यार, अभी मैंने ओपन करी थी। दिस वन। ओके, तो वाइज यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं हम इंटरव्यू में। फिर गाइस यहाँ पे तो 10:58 हो चुके हैं, 11 बजे इंटरव्यू है, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे को 5 मिनट पहले ज्वाइन करना चाहिए था। और इसको मैं विदाउट साइन इन ज्वाइन करूँगा। सी गाइस, जब मेरे को एक्सेप्ट करेंगे लॉबी में देन इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सबमिट में कर देते हैं। श्योर मैम, थैंक यू। तो गाइस कर चुके हैं इंटरव्यू में, पैनल के साथ चेक कर रहे हैं पैनल अवेलेबल है या नहीं। मोस्टली बड़ी कंपनी में ये होता है कि पैनल अवेलेबल ना हो। मेरे कई इंटरव्यूज ऐसे मतलब वेस्ट गए कि मैं ज्वाइन किया और पैनल अवेलेबल नहीं होता और दोबारा मुड़ के उनकी कभी को, लाइक अभी पिछले वीक ही मेरा विप्रो के साथ शेड्यूल हुआ था, तो अभी तक तो उनकी कोई बैकअप नहीं है। मेरा बस सब ही हो रहा है, ऑलरेडी मैं इंटरव्यू ज्वाइन कर चुका हूँ। श्योर मैम। हाय मैम, आई एम गुड मैम, हाउ अबाउट यू? Yes, ma'am. So first of all, ma'am, thank for this opportunity. My name is Prince, and I have around 7.8 years experience along with the .NET and C Sharp. So first, at very first, I have started with my career with the C Sharp. Over the 2 years I have spent in the ASP.NET and
ADO.NET. Post that I have converted my I connect my technology to ASP.NET to ASP.NET MVC, and post that I have started working on .NET Core MVC and .NET Core APIs. So all I spend my relevant experience with the C Sharp and .NET and .NET Core is around 7.8 years. And along with that, I have experience with the Angular. Angular I have spent around 6 years, and with the AWS, like I have experience with the most of the service of the AWS. I have expertise with serverless technologies like Lambdas and EC2 and technologies like with the Lambdas I can set up the project with on AWS. So I have around 4 years experience with the AWS as well. And along with that, I have experience with the Amreco, which is the CMS of .NET. And recently, I am working on the banking project, which is for the Dubai location. In AWS, like nowadays, what we are doing, we are working for the serverless SOA application, service-oriented applications. Like we are working with the Lambdas, and we are working with the CloudFront, and we are working with the API gateways. So that is the common architecture we are using. But I have experience with the yes. The UI and all thing we have placed with the S3 bucket and CloudFront, and the API we have hosted within the Lambda, and we have connected this to API gateway, and to API gateway we are calling the API within the UI, which is hosted in the S3 along with the CloudFront. Normally, ma'am, using the AWS CLI, we are having in our system, and we are handling that kind of application from our system. Ma'am, yeah, for deployment, basically we need to raise a request with our support team. So they will provide us 1 day of like 1 day of the client ID and secret, and using that SPS, we are able to connect with the UAT and production environment where we need to deploy the Lambda and application. And through the Visual Studio itself, we can able to deploy, and directly we can able to deploy using the zip file over the Lambda and the zip file and over the S3 bucket, and we can do invalidation after. Yes, ma'am. API gateway, ma'am, basically we are attaching our lambdas. So we have around right now the application I am working on, it is containing around 35 lambdas, and we have connected it to API gateway. And using the API gateway, we are able to maintain all the lambdas using the one end. Yes, ma'am. No, yes. Those all 35 are not the APIs. Some of our like background services. So because in the banking projects, most of the time they are asking for the report. So we have scheduled like services or background services which will schedule and which will execute over a specific time over the day or the month or weekly. Ma'am, I have experience with the 6 years expertise with the Angular, and earlier I have started with the Angular JS, and post that I have also worked on the TS Angular 7, Angular 8, 12, 11, 15, and nowadays I am working with the Angular 18, and currently the latest version Angular 19 contain the server side. That also I have worked for the one project. Yes.
But I have spent my experience with the Next.js application and the React application. Not much with the React, but I have spent with the Next.js application. 2, 3 applications I have worked on. Router, ma'am, basically is the library or the inbuilt class, so we can use to subscribe the event like dynamic URL if we want to build. So we need to subscribe the activate router, and we can get the params from the URL, and we can share that params to API. Routing, ma'am, basically main use of routing is to maintain the URL for the application. Like the component we have made with a different name, but the URL we need to maintain as slash means common URL we need to maintain something. So we can use the routing, and there is a specific application in the Angular to maintain the routing, Angular.routing, Angular icon routing. Lazy loading, ma'am, it is not one-time loading. It is taking some time, taking some delay to load the data of the application. After the DOM, it is loading the content. Advantage of having the lazy loading is to boost up the speed of our application, because once the DOM is created, it will be populated over the speed. Speed tools are there like Google Speed Tools and Google Page. We can test our speed of our application, and using the lazy loading, we can increase our speed of our application. So we can load our domain first, and post that we can run the loader or something else. We can show as a loading, and we can show our. Sorry, I didn't get it actually. First, ma'am, we need to optimize the images. We need to minimize or minify the CSS and JSS applications, and we can also use, if the application is small, and we can also use AOT compiler for Angular application. So this is how we can increase the output, and we can also look at the API, how much time it is consuming from the backend. We can use fork join, and nowadays we can use first value from the there is one new function is there in the Angular. First value from we can use that function as well. Commonly we are using the fork join to call multiple requests at once. Yes, ma'am. Like some of the report pages contain filters, like different filters. So for that, sometimes we need to hit some multiple API. So for that, I have used the programs. No, your voice is actually breaking. Yes. Okay. Ma'am, there is two way we can do. If it is a static, like no more than 5,000, so we can hit the API single at once, and we can get the data. If the detail is too much, so we can maintain the dynamic pagination as well. And one third approach we can also maintain. We can hit multiple API single at once, but for the API, we also need to maintain the dynamic pagination.
Dynamic pagination, like in the API, we can give page number and offset, and we can get the data accordingly. And on the UI itself, when we are clicking on page number 2, so on the backend itself, it will go offset, like that is the page number, count of the records what we have displaying in the first page, and page number along with that we can send. So in the backend, it will offset first 15 record, and it will give the records for the second pages, like 15 to 30. I did not get it, ma'am. Sorry. Styling, okay. Ma'am, yes, yes. Styling, ma'am, I have used some libraries as well. I have worked with the custom as well. I have experience with the CSS and HTML as well. So normally we are using the Bootstrap, but if something required from the client, so I have used, I have worked with the Sync Fusion as well. I have worked with the PrimeNG library as well. Sorry, ma'am. Yes, yes, ma'am. Common component, like we have built somewhere, like for the data table, because on the every page is listing data table is the common. We need to set the record and pagination and all things that we have set as a common. And even in the last company, what we have did is we have created one npm package and hosted over the npm, and we are using that npm for our project. Authentication, ma'am, normally from Angular we have did with the JWT token, like with the behavior subject, we are able to maintain the token all over the application. And like I have experience with the NGRX and NGXS, so we are storing that token within a variable, and we are using over the application using the session. And third way, we can store the token in the local store, and we can use over the. Authorized, ma'am, on the like on API level, we need to maintain the authorization that authenticated person is authorized to access the particular roles and particular API or not. So using the attribute, we can able to authorize, and using the roles, we can able to authorize. On the front end, we can maintain the check according to the roles, so we can done the authorization on the front end. Checks. Yes, ma'am. I have created around 12 to 15 dashboard I have. Ma'am, basically, some of the free libraries are available for the NGX library, so we are using that first. And some of the paid library we have used for the Sync Fusion, and in the PrimeNG as well, some of the charts are available, so we have worked with that as well. Kanban graph and Kanban table, we have also Kanban calendar, so Kanban calendar and other calendar I have also worked on with the PrimeNG. Sorry. Okay. Error codes, ma'am, commonly error codes like 500, that is the internal server error, 502, that is a gateway error, and 404, that is for not found, 403, that is for permission error, 400, that is for bad request, 200 is for okay, and 220 is for okay but no content is there. 300 is for the redirection and everything.
301 is for the permanent redirection. Sorry. In API, ma'am, we are able to maintain using like one common page also we can maintain, but we can maintain some middlewares, and using the filters we can able to write down our logs, and we can troubleshoot if something occurs. I have worked with the default logger as well. Along with that, I have experience with the Sterilog library as well, and some of the other libraries and custom logs I have also built it, and we have used for some application. Yes, ma'am. I have experience with the SQL, and along with that, just from last 1 or 2 years, I have started working with the PostgreSQL. Inner join and left join, ma'am. Left join is, ma'am, basically we have two tables, table A and table B, and once we join the left table, left join, so it will take all the data of table A and some of the data which is available in the D according to joins. According to P, we have a compare. It is taking data from the table B, and inner join is also known as the right join, so it is the vice versa of let's say. Triggers, ma'am, basically we are using for some automatic configuration we need to build, like on insert and on update, on delete, we can maintain the trigger. Like in some DB, we need to maintain who inserted this one, and like for the logs as well, and for activity, we need to maintain who have done in the activity. So we can maintain the trigger for that. Indexes, ma'am, basically we have used to optimize our database. Indexing, there are two type of indexing. I I forgot actually, because right now we are working with the PostgreSQL. Two type of indexing, that is cluster and non-cluster indexing. Non-cluster, yes. Cluster index will be the one on over the table. It is stored all the table, and once we fetching the data from the table, it will come out with that application with the already sorted tables. And non-cluster index is, it can be multiple over one table, and it is optimizing according to the keys, and we can able to fetch the record from the DB according to the keys. Synchronous and asynchronous, ma'am, basically we have used for the APIs, like synchronous API and non-synchronous API we have built. Synchronous API is it is performing a task not in the linear manner, but when we are using the await keyword along with the asynchronous, it is waiting for the result, and then it will execute the next line of code. It will wait for that code need to be executed first, then only it will go to the second. Multi-threading, ma'am, like multiple thread in the system we have open to build some specific task. So
what we have done for the multiple threading is we can run the application. Once it is complete, it is log the data accordingly. But in the meantime, we can able to send to the user that process is begun in the background, and you can wait and soon you will get things. Like for the report, we have used the multi. Sure. Okay. Where I need to try over the notepad on within the compiler. Okay.
Like this we can able to maintain, and we can able to see how much character we can. If you can, I can also explain what I will. So first of all, ma'am, the string I have converted to the character array. There is one inbuilt library inbuilt function to convert string to character array. So we have stored in the character array, and to maintain the records, what I have built it is one dictionary along with the key name and the count what we are going to store. And I am running the loop over the character array, and I am getting the string one by one. And like first it will take a z. In item it will come as a z, like it is not containing, so it is come to this, and it will add the containing and integer as 1, like count as 1. And second one is o, again it is inserted as 1, but third time with the o, when it is coming, it is come to this condition because it is containing the key, and we are taking the count. I have increased the count and again inserted to this item. So for the o, it will come as 3, z1 o3 m1 r1 n2. First default, ma'am, like to take the value if it is not containing another value, but for the surety as well, because if it is containing the null, it is not required, but we can return for the security. If we cannot use the value directly because it is coming as a, we require the key pair, and it is coming as a I enumerable, and we need to convert it to key value. So we are using the first default, like it is containing the first value which we have filtered. So it's strings actually. So, yeah. No issue. No, nothing from my end. Okay, thank you. Have a nice day. Guys, at least इंटरव्यू खत्म हुआ, बट मजा आया, लेकिन बहुत खतरनाक इंटरव्यू। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, खतरनाक तो नहीं कह सकते, मतलब मतलब इंटरव्यू का मतलब ऐसा इंटरव्यू था, मतलब मैं मतलब नर्वस हो रहा था जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाई एंगुलर पे आ गया, अब एंगुलर का मैं कैसे मतलब वो करूँगा, कैसे मैं टैकल करूँ, तो मतलब थोड़ा नर्वस हो रहा था। उन्होंने मेरे से एक कोड भी पूछा, वो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आप बताओ कमेंट में, मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन, तो मेरे को बताओ कि ये कोड मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। आई होप सो, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मेरे को यूज़ करे हुए .NET कोड, एंड दीज आर द मतलब छोटे लॉजिक तो हम मतलब यूज़ ही नहीं करते हैं कोड वगैरह में, क्योंकि बड़े बड़े लॉजिक होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर मेंटेनिंग द कोड। इफ यू आर डेवलपर यू कैन आल्सो नो माय फीलिंग। So let me share my screen. I will show you what question they have given to me. Yeah, so this is the question man they have given. So I have shared my screen, and मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, तो चट से जो समझ में आया मैंने एक API बनाई और उसी के अंदर कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। एक लूप लगाया फॉर ईच। आई नो दिस विल कंटेन द मोर मेमोरी, बट मेरे को जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया मैंने वो डाल दिया। वो चाह रहे थे कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो है उन्हें चाहिए कि उन्हें स्ट्रिंग और उसका काउंट चाहिए कि जी कितनी बार प्रेजेंट हो रहा है, एम कितनी बार प्रेजेंट हो रहा है, ओ कितनी बार प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, आई नो कि एक यहाँ पे मेरे से गलती हुई, बिकॉज जी एंड जी वन इज द
one is a big one and one is a small one. So we need to maintain here somewhere for the two lower, we need to maintain here and here as well. But क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहावत है ना, से वो अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई के, पछताए होत क्या जब एचआर चुग गई हमारी अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। सो धन्यवाद, टाटा, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं आपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी और कंपनी के साथ इंटरव्यू में। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर। ओके।